Welcome back to Game On Hay. 20 minutes to go before the start of today's first match between Afghanistan and Namibia in Abu Dhabi. We've seen the toss, we've seen Afghanistan decide that they're going to bat first again, they're going to try and set a total they can defend yet again. And they have decided to make this the one change in their side. So we have a look at the team that they're putting out in Abu Dhabi today. No Mujib today, that's a disappointment for maybe the spectators, not a disappointment I suspect for Namibia. We'll have one less mystery or one less very good spinner to deal with. Some familiar names at the top of the order in Zazai and Shahzad. A very strong top three with Ramanullah Gurbaz coming at number 3. Afghanistan, he's retiring at the end of this game. So let's wish him well. Let's wish him well after a long career, successful career overall, and hope that his day today is a good day. But the final change, the one change we need to look at, it comes at number 11. Hamid Hassan, so a seam bowler, a pace bowler. And Aaqib tells me he was once very, very quick indeed, but he's lost a little bit of pace now. He's coming in to replace the spinner, so that is the change. For Namibia, well, these are not necessarily household names unless you live in Namibia. And they're captained by Gerrit Erasmus at number 4. David Wiese is their star player who's come up from South Africa, played a lot of franchise cricket over the years, and has starred in this T20 World Cup over the last couple of weeks. And Ruben Trumpelman, who was the man who started that game against Scotland so dramatically. He looked a real find, a really good talent with that very good left-arm pace. So those are possibly the star players in that Namibia 11. And as we say, it is Afghanistan who have decided yet again to bat first. And no surprises there. Rashid bhai, जैसे आप कह रहे थे, पहले बारी करेंगे, उन्होंने मिस चेंज करना चाहिए था, लेकिन खुशी हुई देख के हामिद हसन को। और ये वो प्लेयर हैं जो कि पहले हीरो अफगानिस्तान का कहें तो यही हैं। डोमिनेट किया एसोसिएट मेंबर्स के ऊपर इन्होंने, जो लेवल 5, 4, 3, 2 इस तरह से जब आप आते हैं खेलने के लिए आईसीसी की क्वालिफिकेशन में, इनका बड़ा रोल रहा। तकरीबन 70% ये इंसान थे जिनकी होर्डिंग पूरे अफगानिस्तान में लगती थी, और जाके मोबाइल कंपनीज हों या कोई भी हो, तो ये स्टार आप समझ सकते हैं। दुबई में इनके जो साइड स्क्रीन थे उसके बाद जाके टकराए तो दोनों नीज इनके रह गए थे, और ये फिर उसके बाद कमेंट्री में आ गए थे। वर्ल्ड कप में आते हैं, थोड़े अरसे के लिए खेलते हैं, लेकिन दोबारा कमेंट्री करते हैं या एक्सपर्ट बने। ये बहुत अच्छे बॉलर थे, जैसे आकिब ने कहा, इस रीजन के इवन पाकिस्तान को मिला के भी ये बहुत ही अच्छा इनका एक रेपुटेशन रही है। बाकी आकिब और इन्होंने भी देखा हुआ है, उनके बारे में बात कर सकते हैं ये दोनों। तो आपको लगता है कि जो एक फास्ट बॉलर मिसिंग हम कह रहे हैं अफगानिस्तान के लाइनअप में, अभी हामिद इतने, अब मैच की बात तो देखेंगे, अभी भी उनके अंदर वो चीज़ मौजूद है? आपने लेटेस्ट कुछ देखा है उनको बॉलिंग करते? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए कि जो आपके पीक टाइम पे आप इंजर्ड हो जाते हो और फिर 4-5 साल के लिए आप बाहर जाते हो, तो आपको ऑब्वियसली एज फैक्टर भी हो जाता है, आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं होती, आपकी वो एनर्जी नहीं होती, वो एजिलिटी नहीं होती है। स्पेशली एक फास्ट बॉलर के अगर बैक और नीज उड़ जाए तो ये इसके बाद कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक वो सिर्फ उसकी जो पास्ट की रेपुटेशन है, और उनके पास कोई ऐसा जेन्युइन पेस बॉलर नहीं है। ये वापस आया था 2019 के वर्ल्ड कप में, 4-5 साल के बाद स्टिल वो कर रहा था, वो टच कर रहा था 140 पे। आई थिंक अभी इनके पास रिसेंटली इतने पेस का कोई बॉलर नहीं था, तो उनकी मजबूरी थी उसको वापस लेके आए। लेकिन स्टिल होप फॉर द बेस्ट के, आई होप कि वो मुजीब के ना होते हुए कुछ अच्छा करे, और आई थिंक अ बिट रिलीफ फॉर नामीबिया मुजीब के ना होने से। सगुली, ये you know, he started even before you. You must be 40 or something. That Hamid. He used to play with me in my club. So you get the next World Cup, you want to go back after doing expert? I wish, like, it's too late. I think you should move to Afghanistan and become their David Visa. Next T20 World Cup. So you can become born again. That's probably that's the way it works. You can say. Okay, well, that game will start in 15 minutes' time or so. Don't forget the second game today, India taking on New Zealand. We've had a little bit of a look at Virat Kohli and his strengths in that first game. Obviously, Virat Kohli desperately needs to win a game now to keep his side's chances alive. Equally so, New Zealand, India, it's very much a key game for both teams. In terms of India's batting, Rishabh Pant was the only other batsman the other day against Pakistan who
looked to be in some sort of form. He got 39 to Virat's 57. So, yeah, he's a key man. Again, he's one of these players, can be an impact player, can be a reliable player. I just get the feeling, actually, that Patton's gone a little bit off the boil there. The other day, he doesn't bother to use his two hands. One was enough to clear the road. and when he used two, it went up. But I think, Hassan Ali deceived him in the air. Yeah. He was lucky at one point that ball still goes in the stands. What I know is the fact that most times when you're deceived in the air, you sometimes stop with the shot. Yeah, but he follows through. And if you notice, he's a power pack guy. He's a strong fellow. Yeah. Well, one thing we know about this is that whenever you get these two teams, two quality teams up against each other, there'll be a bit of pre-match hype. I mean, there's a bit of interest in this game, and they're already having a go at each other. Yes, of course. कुछ गर्मा गर्मी चल रही है पहले ही इन दोनों टीम्स के दरमियान. वो हमने देखा है कुछ न्यूज़ पे कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो शाहीन की मिसाल दे रहे हैं इंडिया के बैटर्स को, और उसके ऊपर एक जवाब भी आया है. होपफुली आई कैन मिरर व्हाट शाहीन डिड द अदर नाइट अगेंस्ट इंडिया. ये ट्रेंट बोल्ट का स्टेटमेंट आया और विराट कोहली ने भी इसके ऊपर जवाब दिया है. सो द पंचेस एंड काउंटर पंचेस हैव स्टार्टेड. इफ बोल्ट इज मोटिवेटेड टू इमिलिएट शाहीन, वी आर मोटिवेटेड टू काउंटर हिम. तो अभी से पहले से ये हाइप क्रिएट हो गई है राशिद भाई, और लफ्जों की जंग तो शुरू हो चुकी है. इन दोनों की काफी अभी वर्ल्ड कप जो बाहर किया, न्यूजीलैंड ने किया ना इनको, तो सेमीफाइनल में ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तो इनके आपस में बहुत ज्यादा मैचेस भी होते हैं और अपर हैंड हमेशा इंडिया का रहा है. और अगर आज के मैच की लेते हैं कि वर्ल्ड कप आधा डिपेंड आज के मैच पे कर रहा है. अगर इंडिया आज हारती है तो बहुत सौ के लिए आज जो व्यूवरशिप की हमने बात की, 50% व्यूवरशिप खत्म हो जाएगी. जिस तरह 2007 में पाकिस्तान इंडिया बाहर हो गए थे, याद होगा वेस्ट इंडीज में, तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया. उसके बाद आईसीसी ने नया ट्रेंड लेके आए थे कि किस तरह इनको आखिर तक लेके एक ग्रुप में डाल दे. तो आज का मैच ये सारी सूरत हाल देखते हुए लगता है कि इंडिया हारेगा नहीं. अगर हारता है तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया पूरे भारत के लिए. लेकिन उसमें एक चीज है ना, सारा साल या साढ़े 4 साल 5 साल इंडियंस and Pakistani, they don't want to meet each other, but definitely during the World Cup in cricket, they wanted to see twice, see playing them all the time, isn't it? ये राशिद भाई जो बात कर रहे हैं उसमें जब एक ही पूल में दोनों टीम्स आ जाती हैं तो फॉर्मेट ऐसा है वर्ल्ड कप का कि एक दफा ये पूल में मिल सकते हैं, और क्योंकि क्रॉस सेमीफाइनल्स में चली जाती हैं टीम्स तो दूसरा चांस होता है कि फाइनल में मिला जाए. तो इसके ऊपर राशिद भाई बात देखिए. इस पे हमने एशिया कप देखा, 3 दफा खेले हम लोग. बेनिफिट आईसीसी उठा रहा है. अगर हम दोनों आपस में बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते तो बेनिफिट कौन हो रहा है? आईसीसी हो रहा है. हम आपस में खेलते रहेंगे, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, तो दोनों कंट्रीज को, बीसीसीआई और पीसीबी को बेनिफिट होगा फाइनेंशियली तौर पे. लेकिन ये दोनों नहीं खेलते तो बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी हो गई, वो आईसीसी हो गई है. यहाँ पे आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें, पाकिस्तान और इंडिया 2 दफा खेले, शायद फाइनल खेले और ओपनिंग मैच खेले. तो ये शोकेस जो मैचेस होते हैं, पूरी दुनिया देख की जो नजरें होती हैं पाकिस्तान इंडिया पे होती हैं. और इसमें भी यकीन से नहीं कहा जाता, लेकिन आज अगर जीतते हैं ये लोग तो बहुत ज्यादा चांसेस 70% है कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल खेलती है. उसमें फिर रेवेन्यू देखें, ब्रॉडकास्टर का देखें, पूरी दुनिया का देखें, तो वो आसमान से बातें करने लगता है. और इसी तरह से क्रिकेट परवान चढ़ रही है. आईसीसी के क्लेवर हैं ये लोग बहुत कि इंडिया पाकिस्तान को इंगेज रखते हैं. ऐसी डिफरेंट चीज़ है. लेकिन जब आप आईसीसी के इवेंट की बात करते हैं, इंडिया नहीं हो या पाकिस्तान नहीं हो, तो इसको इस सब कॉन्टिनेंट में देखने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे. David, they have already planned and planning India-Pakistan final. You shouldn't be a happy man. England, you're writing off. Okay, so what, for the next 2 weeks we can just go and swim and play tennis, and Vivian can play golf, and we pitch up on, what is it, November the 14th for the final. Welcome to India, Pakistan. So they are saying India is going to beat England in the semi-final if India wins today. That's what they are saying. How do you feel about that? Can I say they can say whatever they want? It is the unalienable right to say to speak your own opinion. I will be wearing blue when England play next.
and we will see whether it's true or whether England carry on the form that they showed us so There are two emphatically blue last playing on the field. So which blue you know? Good one. night. Can I Which say, England blue is? can I say it's the best point you've made of the last? No, what we've seen so far, there's a lot of impressive talk. You know, we saw Erasmus as well saying that he's not worried about names and all that sort of stuff. It's nice to have this sort of talk, but then you've got to execute. Yeah. That's the most important, and I'm looking for the execution. Impressive earlier, the same with Virat Kohli and Trent Bolt. Let's see what happens when this match finishes. Can I say, just going back to India and England, the two sides in blue, obviously a lovely colour. I mean, blue suits me entirely. Lovely colour blue. When you talk about the word execute, it has two meanings. One is to play your skills as best you can, and the other is to take out the other team, So what's going to happen? behead the team. No, we So don't want no. We don't want no beheading here. That's not in my business to behead anyone. Okay, let's tone it down to win. Tone it down a little bit, yeah. Just to win. Yeah, Okay, tone it down. cool. Yeah. All right. Well, Well, you've shown faith in your team. I'm going to show faith in my team. nothing's wrong with that. These guys have definitely shown faith in their team. This all the beheading is because he's been losing on Hangman, the game Hangman. Oh, You're giving away secrets. wow. You are giving away wow, secrets. wow. And I've looked across and I've seen him like, Hang on. No, if we're talking about choking, there are other sides have done that in World Cups before. So, Afghanistan, Namibia. Afghanistan batting first. The big game of the day, eh? Yeah, again. Yeah. Afghanistan batting first. आपकी क्या thoughts हैं इसके ऊपर? आई थिंक अर्ली ऑन जिस तरह हमने कहा था चांसेस तो है अफगानिस्तान के और वो कॉन्फिडेंट है कि फर्स्ट बैटिंग करके दूसरे में उनको बॉलिंग का एडवांटेज है लेकिन लेट्स सी आज उनके पास एक मिस्ट्री बॉलर नहीं है और आज रन रेट मतलब अगर अफगानिस्तान आगे जाता है ऑफ कोर्स आगे इंडिया और न्यूजीलैंड से मैचेस हैं आज वो रन रेट को भी कितना दिमाग में रखेंगे आपको लगता है नामीबिया के अगेंस्ट ये जो पहले बैटिंग कर रहे हैं डेफिनेटली उनके होमवर्क किया होगा हर चीज़ पे क्योंकि उनके पास भी अच्छे कोच थे टीम में जो भी है होमवर्क किया होगा कि क्या आगे अगर हम चांसेस बनते हैं तो ऑब्वियसली उनके माइंड में होगा रन रेट पे लेकिन फर्स्ट उनके प्रायोरिटी यही हो कि लेट्स विन दिस मैच एंड देन लेटर ऑन वी कैन सी लेकिन आज का मैच जो दूसरा मैच है फिर उसके बाद भी काफ़ी डिपेंड करता है उस पर I think the batting first what Afghanistan might be looking at the run rate also because in the next two games that might also come into play. They're already +3 somewhere in that table. Well, I think Afghanistan's problem, they'll play today. Obviously, Namibia, they are fancied to beat Namibia for all the obvious reasons. Then it's India and New Zealand. So then, as I say, as we said at the start of the day, the most likely, but never guaranteed, the most likely thing is that obviously one of New Zealand or India will take the semi-final slot as number 2 in the group. 6 and 8 depends who wins today between New Zealand and India because it's likely that one will have 6, one will have 8 at the end of the group stage. In which case Afghanistan, even if they have a surprise, another surprise later on, it probably won't matter. let me tell you, most of our predictions so far have come through. And That's because you're quality, Viv. And today I'm back in Afghanistan. Well, that's a big call. Yeah, I'm back. You've really gone out on a limb there. Yeah. So you're back in the team with the acknowledged superstar players against the team that's qualified from nowhere. The great apart story from about Namibia. Erasmus talk about the fact that they're not into playing names, I want to see that matchup really because Afghanistan, in my opinion, they've got a lot of class, and I think they'll be too classy for Namibia. If they don't like playing names, they can play that guy, the other guy. The other guy. What's his name? Who's in the flick? The one that we know but we can't remember. They can play all those guys and see how they get on then. I think definitely Afghanistan, and then India, New Zealand. Because I'm going to support New Zealand because, as Rashid mentioned, because they don't play bilateral series, India and Pakistan with us. So this when they play in ICC tournaments, the money goes to ICC. So that's why I'm not going to support it. It has to be New Zealand. Aaqib. And why not? Well, you're making a very I have strong all the point. reasons to support New Zealand, isn't it? And there is one more reason. There's a big chance for Afghanistan. They have the advantage to beat New Zealand. Yes.
in India. I'm going to back India. They are also in blue. That's why you're wearing the blue. Yeah. Well, I've got some interest in India as well, so I've got some Because look, sentimental reasons why. We know that. He's got more reason to support India. A couple of reasons. Couple of reasons. Sana, can you just reassure me? This very, very august panel, I thought was meant to be discussing matters purely on cricketing terms, but there's emotion, there's patriotism, there's the fact that Viv had a girlfriend in India once. Nothing serious. We're getting distracted here. Yeah. And this is the man who is going to bring us back from all the distractions. लास्ट चीज ये है कि अफगानिस्तान को अगर मुजीब नहीं खेल रहे थे आज तो बैटिंग सेकंड करनी चाहिए और 140 तक ये चेस कर सकते हैं नबीबिया की टीम क्योंकि वो डिफरेंट है नबी और राशिद खान इतने रन बचा लेंगे ये मुझे मुश्किल लगता है क्यों गुल्लू काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। Teams like Associates, I think Mujib is more threat than Rashid and Nabi. Nabi is manageable in power play. So I think without Mujib. that guy, Namibia can upset them because Yes. they have David Wiese. Yeah. I think now Rasmus it's going to be Schmidt a good game, not the other day which we saw against Afghanistan, Scotland. और देखते हैं कि क्या ये गेम इतना ही इंटरेस्टिंग होगा जितनी ये डिस्कशन इंटरेस्टेड थी चल जाते हैं लाइव गेम की तरफ